general overview I'll give for the preparation. It's a 3-stage exam, as you all know, okay? So the problem with this exam is there is no surety in any stage whether you will qualify this or not. So what is generally, it's a long race. Okay? So it will at least take 2 to 3 years of your time to prepare for this exam. So what is the most important in this preparation is when you start the preparation, so before starting, you should thoroughly know your syllabus, whether it's for the mains part or for the prelims part, ठीक है? And for the mains part, why it is very important is क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई हो जाता है तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको उतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है? तो जो 3 महीने का विंडो होता है ना, डोंट एक्सपेक्ट यू विल बी able to finish that मेंस का सिलेबस उस टाइम में. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द मेन सिलेबस. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका मेंस का सिलेबस है वो थॉरो होना चाहिए आपके, ठीक है? वेदर इट्स ऑप्शनल, वेदर इट्स जीएस. सो I mean, how many of you know entirely the syllabus of the mains? अच्छा, आप लोगों ने ऑप्शनल डिसाइड किया है, व्हाट इज शुड बी योर ऑप्शनल? एंथ्रोपोलॉजी. सिलेबस देखा है, अच्छे से पता है विच पार्ट इज देयर, किस पार्ट का ज़्यादा ट्रेंड है, PYQ एनालिसिस, ऑल दैट यू हैव डन, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच टू ऑप्शनल, ठीक है? एंड फॉर द, आई विल टेल यू, सी, I'm not saying for the UPSC. For the UPSC, even if you have a Sanskrit optional, it is level playing field for everyone. But for the JKPSC, there are certain optionals where you will have an advantage, and that is an open fact for everyone. I mean, no one hides it, but there are certain optionals where you will have an advantage, like anthropology, PSR, where the major selection comes from. So, if you haven't decided your optional, try to decide optional from these parts. See, I am not saying you should not take an optional of Kashmiri or something. You can take it. I mean, if you know much about it, you can take it. But at the end, you have to get select. ठीक है? आपको स्कॉलर नहीं बनना है और आपको किसी तरीके से 300 नंबर लाने हैं. For the JKPSC part, for the UPSC part, even if you have a 280 का score, that is more than sufficient for your selection. ठीक है? So for the optional part, if you have decided for the anthropology part, it is broadly divided into 4 or 5 parts. ठीक है? First is the physical part, then the socio-cultural, then the genetics, and speak it out, it's okay. Cultural, socio-cultural, physical, and economic. Economic is part of socio-culture, then there is genetic part. At the end, whatever the part is there, that is for the physical part. Okay? So I'll give you a brief introduction with respect to the anthropology, why you should select anthropology as optional, because this is the session for that. See, first and foremost, I think 40% or 50% of the crowd in JKPSC gives out anthropology as optional, who are giving mains. ठीक है? So you will have the best guidance, you will have the material availability there, and it has the high success rate. With respect to the other option, I'm saying that. And because most of us will be from the engineering background, so we know how to mug up things. And here a lot of portion is for mugging up. Okay? So that is the main advantage of anthropology is optional. Okay? So I'll tell you briefly about the sources which I had. For the physical part, generally I had the PNAT. Okay? And for the social culture, I had used Braintree and my class notes. And I will not say, first and foremost, I'll say for the GS part, you people don't need any coaching. Very clear with that, because GS is the thing which you can do by yourself. But for the optional part, it is better. See, I'm not saying you should. I'm saying it's better if you take a mentor's help, or you have a group, or you take coaching from somewhere, to be very frank on you people. So it is better if you take a coaching from somewhere, because what happens, the syllabus is vast. You have to cover it, you have to revise it. So whenever you have that discipline in your classes with respect to covering of syllabus, that adds to your preparation. Because what happens if you start on your own, I'm not saying you cannot start it on your own, definitely you can start the preparation on your own, but what happens ना, आप detrack हो जाते हो. एक point of time के बाद आप कुछ philosophy पढ़ना start करते हो किसी author का, और फिर आपको interest नहीं आता है, और फिर आपको वो याद आ जाता है जब आपका prelims qualify हो जाता है, फिर mains का time आता है. That is why I'm saying coaching should be, I mean, you should take coaching for that thing. ठीक है? Because what happens in the coaching is they will cover your basic part. For example, social culture है, physical है. उसके बाद आप once you go home,
See, there are a lot of sources, like there is IGNO, there is EPG Pathshala. You can read those topics from there, or there is Amber and Amber. Okay? So you can read those topics from there, put up the case studies. So that adds a value addition to your notes. Okay? That is why I am saying कि अगर आपने start ही खुद से किया है ना, तो बहुत time लग जाता है. I mean, if you start it yourself, I'll tell you what will happen. It will take at least 6 to 8 months for you to finish it off by yourself. If you have a coaching, 4 to 6 months में हो जाएगा. That is why I'll say, see, I'm not vouching for any particular coaching center, be frank with that thing, but I'm saying it guides you, it guides your preparation. Okay, so for the physical part, I'll say Pnath was there. For the social culture, Braintree and my class notes were there. And for the genetic part, Pnath is also sufficient in that part. And something, see, Akshay Jain search book is there, that I have used extensively for the part. So these are all the sources, major sources I had there. Because my base was the class notes. After that, the value addition, like Amber and Amber से कोई case study उठा दी, Pnath से कहीं से कोई case study उठा दी, किसी EPG पाठशाला, IGNO से. So here you will have to work extensively. ठीक है? Because if you are able to score at least 300 in JKPSC ना, तो आपकी वो ना एक सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है, ठीक है, for the optional part I'm saying. But that never means कि आप optional में 300 स्कोर करोगे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. Because I have seen people who have scored 300 and they haven't got selected. 28. ठीक है, so be sure कि even after optional your GS is fully covered. ठीक है, so I'll tell you how to approach the major parts. Like पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी. देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज एंड हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड टू डिफरेंट सोशल साइंसेज. ठीक है, सो उसके लिए मेरे पास जो बेसिक मटेरियल था दैट वाज द ब्रेन ट्री. ठीक है, बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन वे उसका कंटेंट जो है इट यू कैन यूज इट इन लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस. ठीक है, बिकॉज ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आर देयर, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक साइंस, मतलब व्हाई इज इट कॉल्ड अ साइंस, बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिविटी विच इज कमिंग देयर, राइट? So that all will be covered in the initial part. Anthropology, meaning, scope, development, all that. Then comes the physical part. See, there is a trend which is said कि जो physical part होता है ना, that is scoring, and that is true. Because I'll tell you my experience. Last year what happened, I attempted most of my questions from the social culture part and I was not able to score good, to be very frank with you. But what I did this time, I pick and choose questions from the physical part because that is the trend where you are able to score more. I'll tell you why. Because in the physical part, what happens, you are able to make diagrams like of the different species, like skull ka, different body parts का उनका. तो what happens that ना वो attract करता है examiner को. और social culture में, see, I'm not saying social culture में also you can score marks, but the problem is there you have to do an extensive research because what they are doing this time in the UPSC especially, they are interlinking topics. Like last year there was a question, how descent is related, I don't remember exactly, it was related to marriage or some residence. So they have interlinked the topic. ठीक है, kinship और family को relate किया था. So वहाँ पर आपका जो basis है ना वो बहुत अच्छे से covered होना चाहिए. आपको पता होनी चाहिए how to interrelate topics. But for the physical part what happens, they directly ask you questions. Like this year it was Australopithecine direct, where it is found, what are the features of this, all that. So that is why I'm saying physical is bit scoring as compared to social culture. For the social culture part, I'll tell you sources. Just a second. See, first I'll say the social culture का पहले मेरे क्लास नोट्स का था, उसके बाद आपकी एम्बर नंबर जो मैंने वो केस स्टडीज बोली, फिर फॉर एग्जांपल आई टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस पार्ट. मैरिज है, एक टॉपिक है मैरिज. सो वहाँ पर आपको what is important is they will not ask you direct questions on that. What about the controversies which are going on, whether it is a live-in relationship, so they are asking questions from that topic. So उसके लिए you should be able to relate your topic with the current affairs, how the judgments are coming from the Supreme Court. See, because if you give those examples in your answer na, we assured they will give you at least 2 to 3 months extra for that because they know how you are able to relate your content with the current affairs and you are well aware and well read about that topic. For example, there is family. ठीक है, family में you have various types of family which are evolving with time. ठीक है, kinship में है, see, for the kinship part, like there is one
टॉपिक डिसेंट एंड अलायंस, ठीक है, वो हर टाइम आता है, इट कम्स एवरी टाइम. सो उसके लिए यू शुड हैव लाइक whoever is given kinship and alliance की theory, Levi Strauss है, you should well read about that thing, because see what happens here, ये PYQ जो repeat हो रहा है ना, तो हर किसी ने प्रिपेयर किया होगा. Unless and until you are not well read and you have not researched on this topic ना, you will get average marks for this. इसीलिए सोशो कल्चर को अटेम्प्ट करना इज अ बिट डिफिकल्ट हियर, बिकॉज देन यू शुड बी वेल रेड विद दैट थिंग, ठीक है. आई विल कम टू द then there is the economic organizations, then there is a polity. So these are all the topics which are there in the social culture. So for example, in the economic part, you could relate it to the tribals of the second part, how changes due to globalization are coming in the tribal society, how people are moving away from their primitive economic systems. See, here you are able to interrelate your first part with the second part. So when you are able to show interrelation, when you are able to relate your basic concepts of the social culture with the theories which are there in the unit 6 na, there you start getting extra marks. And the scholars, the anthropologists, whosoever is given something with some name of the book, there you will get marks in the social culture part. इसीलिए social culture part की एक problem होती है कि you have to read very well in this, because writing a very basic answer will not get you marks here, and that I have experienced. ठीक है. And comes the theories part. For the theories part, I'll tell you, I had a class notes for that, and apart from that, I refer to the toppers notes. ठीक है. There were topper notes for the theories part, which I referred to. Lagima Tiwari is there, right? This year All India rank 19. उसके notes मैंने refer किए थे for the theories part, because till last year मेरा theories का part जो सिर्फ class notes था, इस बारी मैंने value addition किया, because unless and until you don't do value addition to your notes ना, you won't get marks for that. So this is my strategy for this part. Then comes the genetics part. Genetics part में आपका PNAT is sufficient. उसके अलावा whenever you do attempt a question for the genetics part, make sure you are able to draw diagrams. For example, there is a question on that Cry-do-chat syndrome disease is there, or syndrome is there. For example, वहाँ पे P5 की deletion होती है. I don't remember, थोड़ा सा forgive me for that thing. ठीक है. तो you have to show the diagram. एक simple सी diagram दिखानी है कहाँ पे deletion हो रही है, so that the examiner gets to know ना कि चलो इसको इतना थोड़ा सा पता है कहाँ पे क्या deletion हो रहा है, या diseases है, different type of diseases आ रही है. तो वहाँ पर आपने has someone referred to Apala ma'am's note? अपाला मैम के नोट्स है ना, यू कुड हैव सीन वहाँ पे डायग्राम्स बना के है. व्हेनेवर अ डिजीज इज देयर ना, तो शी हैज स्वोलन बेली, हार्ट स्वोलन, तो वो वाले जो डायग्राम्स है ना, दे गिव एन इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट देते हैं एग्जामिनर के टू गिव यू 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर दैट. सो दैट इज हाउ यू कवर द जेनेटिक्स पार्ट. एंड जेनेटिक्स पार्ट का एक चीज़ है, इट इज for the physical part actually it is entirely mugging up. You have to mug it up. ठीक है. यहाँ पर कुछ नहीं है, you have to just रट्टा मारना है इसका, उसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, because ये बेसिक बायोलॉजी है आपकी. ठीक है. Then apart from that there is physical का end में वो bio events to fertility, growth and development, all that. वहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि अभी के क्या ट्रेंड्स है. जैसे malnutrition है, different reports which are coming, global hunger index ने क्या बताया है, मतलब whatever the reports are coming from the UN bodies or Ministry of Home Affairs, कोई Ministry NHFS 5, कोई भी सर्वे रिलीज हो रहा है, तो there you should know the trends कि what is coming up, क्या ट्रेंड्स है हमारे सोसाइटी में विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट. फॉर एग्जांपल देयर इज अ केस की जो हमारी मीनार्की की एज है दैट इज रिड्यूसिंग. ठीक है. दिस वाज अ क्वेश्चन लास्ट ईयर. सो हियर यू शुड नो द ट्रेंड्स व्हाट आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी. उसके लिए करंट अफेयर्स, आपका डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना, आपका हिंदू के एडिटोरियल्स, इट विल कम अप समवेयर डाउन द लाइन. ठीक है. सो हियर यू शुड नो दिस. और पेपर 1 को मैंने जितना डिस्कस किया ना, more than this, what you should know whenever you are reading a topic, you should be able to segregate कि PYQs क्या पूछे जा रहे हैं इसमें से. जैसे मैं आपको बोलूँगा, एक टॉपिक है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इकोलॉजिकल है ना, वो चेंजेस ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड, हीट, कोल्ड है. इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, राइट? adaptations, right? Right? Adaptation, adaptability, and what is the third? Acclimatization. You will get that. You are not able to remember right now. It is there. ठीक है. तो वो वाला क्वेश्चन ना हर दूसरे साल रिपीट होता है.
और फॉर एग्जांपल हर दूसरे साल रिपीट होने का मतलब है कि ये आप प्रिपेयर करने चाहिए, और ये 20 नंबर का सवाल आता है, और यहाँ पर आपको PYQ हेल्प करते हैं। जब आपको पता है कि ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है और आपका ना एक बना बना आंसर रिपीट बनाया होना चाहिए, मतलब as soon as you see this question na, your hand should start writing that thing, because whenever you see a PYQ na, there is a trend in PYQ with respect to repetitions. Like I'll tell you, in physical anthropology they had given homo erectus, ठीक है, तो उसके अलावा इन्होंने पिछले साल homo erectus उससे 2021 में दिया था, ठीक है, पिछले साल उन्होंने नियंडरथल दिया था, ठीक है, तो इस बारे में मुझे पता थी ऑस्ट्रेलोपिथेसीन आने वाला है, and when I opened the question book, the first question I saw was australopithecine. And that is how you do it, how you analyze the PYQs. और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उठना स्टार्ट हो गया। सो इसीलिए PYQ की एनालिसिस, PYQ को प्रैक्टिस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस ट्रेंड को फॉलो करके अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यू विल नॉट गेट डिविएटेड, बिकॉज इफ यू सी देयर इज अ टन ऑफ मटेरियल इन द मार्केट अवेलेबल, तो उस मटेरियल से कंसाइसली अपने लिए ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपके PYQs विल बी अ बेस्ट गाइड। उसके अलावा आई टेल यू comes to the answer writing part, ठीक है, so there is a difference in attempting a socio culture का question और a physical का question, बिकॉज देखो सोशो कल्चर इज मोस्टली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्रीनियल कैपेसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, उसका हाउ एवोल्यूशन हुई है उसमें, बाइपीडलिज्म में उसमें, तो वहाँ पे जो आप पॉइंट्स लिखते हो ना, आंसर जो लिखते हो ना वो पॉइंट्स में आना चाहिए, इट शुड बी पॉइंट रिटर्न। लेकिन जब सोशो कल्चर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, वहाँ पे पॉइंट्स नहीं, वहाँ पैराग्राफ आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप पॉइंट्स क्या ही लिखोगे, बिकॉज वहाँ पर आपको एनालिसिस पूछी जाती है सोशो कल्चर के क्वेश्चन में, हाउ दिस इंस्टीट्यूशन इज अफेक्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर पैराग्राफ में आंसर आता है। सो दिस इज हाउ वेरिएशन टेक्स प्लेस विद द सोशो कल्चर एंड द फिजिकल क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर राइटिंग आई विल से द मोस्ट बेस्ट थिंग टू आंसर राइटिंग इज कि आपके जो टॉपर्स होते हैं, जैसे वसीम सर है या अपाला मैम है, इनके आंसर कॉपीज अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, तो whenever you read a topic, you finish a topic, for example सोशो कल्चर का मैरिज का कर दिया, then see कि कौन सा क्वेश्चन उनकी टेस्ट सीरीज में है, then attempt that question। तो उससे क्या होता है ना, when you attempt and compare your answer with those answers, see he is not getting 330 out of the blue, he has written something, and when you compare your answer with his answer ना, आपका with time, if you do it for 2-3 months ना, definitely your answer will improve with time। and the best part about the topper's answer copy is कि जो टॉपर की आंसर कॉपी होती है ना, उसमें जितना कंटेंट आपको मिलेगा ना, that adds the value addition of your notes। वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट once you start doing it ना, at least 20-30% of your optional will be covered by the topper's answer copy। अगर आप उनके आंसर राइटिंग, उनके आंसर अपने साथ कंपेयर करना स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, और वो that is their hard effort which they have put in, and that is readily available to you on a plate। बस करना क्या है, आंसर राइटिंग करनी है, बिकॉज उन्होंने कितना रिसर्च किया है उस पर, उन्होंने कहाँ से वो किस बुक से लाए हैं, कितनी सारी बुक्स पढ़ी है, मतलब दे हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च, बिकॉज आई हैव सीन, मतलब दैट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट विच नीड्स टू बी पुट देयर। तो इफ यू आर गेटिंग दैट थिंग ऑन अ प्लेट एंड यू आर एडिंग टू योर नोट्स, सो यू विल बी value adding which will fetch you marks in the exam, because UPSC is giving marks to those things, so definitely you will also score marks। so मेरा मतलब आंसर राइटिंग का अप्रोच ये था with respect to the toppers की आंसर कॉपीज। उसके अलावा for the paper 2 part, I think Yunus sir will discuss about that, and if you have some questions general anthropology के, you can ask।